Hello student, welcome in my YouTube channel Science Classes. Today we study the class 12 chapter solid state, topic doping and magnetic properties of solid. Before we study doping, we discuss semiconductor. In previous classes we studied the semiconductor solid, which electrical conductivity in between conductor and insulator is called the semiconductor. Electrical conductivity of semiconductor are in between the 10 to the power minus 6 ohm meter inverse to 10 to the power 4 ohm inverse meter inverse. One thing, pure semiconductor is called the intrinsic semiconductor. मतलब semiconductor which does not contain the any type of impurity is called the intrinsic semiconductor. Electrical conductivity of pure semiconductor is increased by adding impurity. That means the electrical conductivity of the semiconductor is less, that which can be increased by adding the impurity. Impure semiconductor is called the extrinsic semiconductor. Impure semiconductor is called the intrinsic semiconductor. Next point, doping. अभी हमने पढ़ा है कि conductivity of semiconductor increased by adding the impurity. So then adding of impurity in the pure semiconductor to increase the electrical conductivity of semiconductor is called the doping. मतलब जब हम किसी semiconductor की electrical conductivity को increase करने के लिए उसमें हम impurity का addition करते हैं, तो इस process को हम बोलते हैं doping. On the basis of doping, semiconductor are two types. First type of semiconductor is N-type semiconductor, which obtained by the doping of electron rich impurities. यहाँ पे when impurity added in the pure semiconductor have more number of valence electron than valence electron of semiconductor, then the extra electron responsible to increase in the electrical conductivity of semiconductor. That means the in this process, pure semiconductor, number of valence electron in the pure semiconductor is less than the number of valence electron present in the impurity. The impurity have the greater number of valence electron than the valence electron of semiconductor. Then this type of impurity added in the semiconductor, then extra electron responsible to increase in the electrical conductivity. So the extra electron, that means the negative charge responsible to increase in the electrical conductivity. So this type of semiconductor is called the N-type semiconductor. यहाँ पे है when electrical conductivity of impure semiconductor increase due to presence of extra negative charge is called the N-type semiconductor or negative type semiconductor. अब how the extra electron responsible for the increase in electrical conductivity, we understand this point by this example. When silicon and germanium group 14 elements, and they have the 4 valence electron in their valence cell, whereas phosphorus or arsenic are group 15 elements and they have the 5 valence electron. Then silicon or germanium have the 4 valence electron and phosphorus and arsenic have the 5 valence electron. When phosphorus mixed in the silicon, then 4 valence electron of phosphorus used in the formation of 4 covalent bond with the 4 electron of silicon or germanium. मतलब जब हम फास्फोरस को ऐड कर देते हैं तो फास्फोरस के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन और जर्मेनियम के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ कोवैलेंट बॉन्डिंग बना लेते हैं. 1 इलेक्ट्रॉन remaining, that is called the extra electron. 5 out of 5, 4 are used in the formation of covalent bond. 1 electron are remaining, that 1 electron is called the extra electron, which become delocalized and responsible to increase in the electrical conductivity of silicon or germanium. Here electrical conductivity of semiconductor increases
due to the negatively charged electron. So the semiconductor doped with electron rich impurity such as phosphorus or arsenic to form the n-type semiconductor. Why this type of semiconductor is called the n-type semiconductor? Because electrical conductivity increases due to the presence of extra electron. Next, we discuss the p-type of semiconductor. What is the p-type of before the p-type of semiconductor, we understand the n-type of semiconductor by this figure. Here is the silicon semiconductor. Silicon have the network structure by the 4 covalent bond, and 1 phosphorus atom are doped in the silicon. Then the 4 electron of the phosphorus used in the formation of 4 covalent bond with as silicon, and 1 electron, fifth electron present as a extra electron, which is responsible to increase in the electrical conductivity of semiconductor. Figure, that is the n-type of semiconductor. Next, doping with electron deficient impurity. Doping with electron deficient impurity. When impurity in this type of impurity form the p-type of semiconductor. What is the p-type of semiconductor? When the impurity added in the pure semiconductor have less number of valence electron than the valence electron of semiconductor. मतलब यहाँ पे impurity के जो valence electron है semiconductor के valence electron से कम है. For example, if the semiconductor have the 4 valence electron, then impurity have the 3 valence electron. Then this type of doping create a electron vacancy. This type of doping create a electron vacancy. This electron vacancy is called the positive hole. Why? Because the deficiency of electron create the positive charge. Anywhere if the deficiency of electron are generated, this cause the presence of positive charge. Vacancy, electron vacancy is also called the positive hole. When the electrical conductivity of the impure semiconductor increase due to presence of electron vacancy or positive hole or cationic vacancy is called the p-type semiconductor or positive type semiconductor. We can understand the positive type of semiconductor by this example. When silicon or germanium group 14 element have the 4 valence electron doped in the aluminium or gallium group 13 element have the 3 valence electron, then Al or aluminium or gallium have the 3 valence electron, whereas silicon or germanium have the 4 valence electron. Then 3 valence electron. Then when Al doped with silicon, then 3 valence electron of aluminium form the 3 covalent bond with the 3 electron of silicon. But in 4th covalent bond, electron of aluminium are absent. Why? Because the aluminium have only the 3 valence electron and silicon have the 4 valence electron. Then in the 4th covalent bond, electron of aluminium are absent. This caused this absent electron responsible for the formation of electron hole or positive hole. Electron vacancy or positive hole. An electron फ्रॉम, अब इसमें क्या होता है, अब कंडक्टिविटी कैसे इंक्रीज होती है. एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ नेबरिंग एटम और नेबरिंग कोवैलेंट बॉन्ड कैन कम एंड फिल द इलेक्ट्रॉन होल बट मूव अदर पोजिशन. फिल इलेक्ट्रॉन होल but electron hole move other position. Due to this electrical conductivity increases. Here जब बगल के एटम से और नेबरिंग कोवैलेंट बॉन्ड से कोई इलेक्ट्रॉन मूव करके इलेक्ट्रॉन होल को फिल कर देता है तो इलेक्ट्रॉन होल दूसरी पोजीशन पे मूव कर जाएगा, जिसकी वजह से अब ऐसा ही कंटिन्यूअस चलता रहेगा. बगल के एटम से इलेक्ट्रॉन, बगल के कोवैलेंट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन आएगा और इलेक्ट्रॉन वैकेंसी और पॉजिटिव होल को फिल करेगा. देन द इलेक्ट्रॉन होल एंड और पॉजिटिव होल मूव इन द नेक्स्ट साइट. ठीक, दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूअस ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस.
Here, electrical conductivity of semiconductor increases due to the electron hole or positive hole. So this type of semiconductor is called the p-type semiconductor. We can understand this point by this figure. Silicon structure, that is the aluminum, electron of Si silicon indicated by the dot, and electron of aluminum indicated by the cross. Here, one covalent bond, one electron of silicon, one electron of aluminum. Other covalent bond, one electron of aluminum, one electron of silicon. But in the fourth covalent bond, only the electron of silicon are present, but electron of aluminum are absent. This is the electron vacancy or electron or positive hole. Here, this electron fill in this electron hole. That due to this electron hole move at this point. If this electron move and fill this electron hole, then the electron hole move at this side. Due to this, electrical conductivity of semiconductor increases. Here the electrical conductivity of semiconductor increases due to the presence of electron hole. This type of semiconductor is called the p-type semiconductor. Next, use of the n and p type of semiconductor. What is the use? Diode is a combination of n type and p type of semiconductor. P type and type semiconductor used in the making diode. Diode is a combination of p type and n type of semiconductor, and diode is used as a rectifier, where n type and p type semiconductor are used in making transistor. Transistor are two types. We study the type of transistor and how we make the transistor in the physics. Transistor are two types, NPN and PNP type of transistor. It is used to detect and amplify radio or audio signal. The solar cell is an efficient photodiode used for the conversion of light energy into electrical energy. One is the important question asked in the board examination. What is the group 13 and 15 compound, or what is the group 12 and 16 compound? Group 13 and 15 element form covalent bond, and some example of compound of group 13 and 15 are INSB, ALP and GAAS and these compound are good semiconductor. GAAS are semiconductor which give the very fast response. That means the group 13 and group 15 elements are combined to form the covalent compound. These covalent compound are very good semiconductors. One example of this type of semiconductor, gallium arsenic semiconductor, which is that type of semiconductor which give the very fast response. What about the group 12 and 16 compound? Group 12 and 16 compound of the element are not perfectly covalent, and ionic character depend upon the electronegativity difference of the two elements. Example of group 12 and 16 compound are ZNS, CDS, CDSE and HGTE. They are not form semiconductor. Group 12 and 16 compound are not the perfectly covalent. Group 12 and 16 compound are not the perfectly covalent compound. So these compound used to make are not used to make the semiconductor. That is a very important question in the board examination. What is the group 13 and 15 compound and what is the group 12 and 16 compound? Then you write these points. Next, magnetic properties of solid. What is the magnetic properties? Magnetic properties of any solid is the response what solid produce which type of response in the magnetic field. मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, किसी भी सॉलिड की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डिसाइड होती है कि सॉलिड जो है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में किस टाइप का रिस्पांस प्रोड्यूस करता है. आप यहाँ पे देखते हैं कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन इन इट्स एटम. किसी भी सॉलिड की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है
उसके चार्ज जो एटम्स में चार्ज इलेक्ट्रॉन होते हैं उस पर डिपेंड करती है। ईच इलेक्ट्रॉन हैव द टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, इट्स ऑर्बिटल मोशन अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के सराउंडिंग जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहता है दैट इज द ऑर्बिटल मोशन, एंड स्पिन अराउंड द ओन एक्सिस, रोटेटरी मोशन, हर इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे भी स्पिन करता रहता है एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। तो इसकी वजह से भी हमारा क्या होता है, यह ड्यू टू इट्स स्पिन इलेक्ट्रॉन इन एटम बिहेव लाइक अ टाइनी मैग्नेट। इस स्पिन की वजह से, इस मोमेंट की वजह से जो भी एटम्स के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो टाइनी मैग्नेट, एटम जो है टाइनी मैग्नेट की तरफ बिहेव करता है। और मैग्नीट्यूड ऑफ दिस मैग्नेटिक मोमेंट इज वेरी स्मॉल एंड दिस इज मेजर्ड इन द यूनिट कॉल्ड द बोहर मैग्नेट्रॉन। इट इज इक्वल टू द 9.27 इंटू 10 to the power -24 एम्पियर मीटर स्क्वायर, मतलब जो उसकी वैल्यू होती है, या फिर बोहर मैग्नेट्रॉन भी इसको बोल सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज सब्सटेंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 5 टाइप्स। फर्स्ट, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और पैरामैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस और डायमैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस और फेरोमैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस और एंटी फेरोमैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी, फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस और फेरी मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, व्हाट इज द पैरामैग्नेटिज्म? Substance which are weakly attracted by the magnetic field is called the paramagnetic substance and this property is called the paramagnetism। जो substance किसी भी magnetic field में मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है उसको हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं और इस प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिज्म। अब which type of substance show the paramagnetic property? That is the substance which have at least one unpaired electron। जिस भी substance में कम से कम एक unpaired electron होता है उसको हम पैरामैग्नेटिक, वो सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं और उनको हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आर मैग्नेटाइज्ड इन द सेम डायरेक्शन इन द मैग्नेटिक फील्ड। दीज लॉस्ट field and lost their magnetism in the absence of magnetic field. For example, O2, Cu2 positive, Fe3 positive, Cr triple positive, etc. Next, diamagnetism. Substance which are weakly repelled by the magnetic field is called the diamagnetic substance। मतलब जो भी सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में मैग्नेट के अपोजिट डायरेक्शन में रिपेल होता है या मैग्नेट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है उसको हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं और इस प्रॉपर्टीज को हम डायमैग्नेटिज्म बोलते हैं। दिस प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड द डायमैग्नेटिज्म। विच टाइप ऑफ सब्सटेंस शो द डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी? Substance which do not have any unpaired electron behave as a diamagnetic substance. For example, our pairing of electron cancel their magnetic moment and they lost their magnetic character। Pairing of electron जब हो जाती है तो उनका मैग्नेटिक, वो एक दूसरे के स्पिन को कैंसिल आउट कर देते हैं जिससे कि एटम्स का मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज खत्म हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल H2O, NaCl, C6, S6, Zn, Mg, etc. Next, ferromagnetic substance. Substance which are strongly attracted by the magnetic field is called the ferromagnetic substance. In ferromagnetic substance, ferrimagnetic substance and antiferromagnetic substance, one terms electron domain are present. What is the electron domain? Electron domains is the group of electron, that is the bond pair and lone pair present in a molecules or in atoms, ions, and electron group is called the electron domain। Simply, in any molecules, a metallic molecule or covalent molecule or any other type of molecules, group of electron is called the electron domains। Okay. What is the ferromagnetic substance? Ferromagnetic substance which are strongly attracted by the magnetic field is called the ferromagnetic substance। Ferromagnetic substance have the large number of unpaired electron। Ferromagnetic substance have large number of unpaired electron with parallel orientation। मतलब इनका ओरिएंटेशन एक ही डायरेक्शन में होता है जिससे ये इजिली मैग्नेटाइज हो जाते हैं। अगर इनमें अगर इक्वल नंबर ऑफ पैरेलल एंड एंटी पैरेलल मतलब क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के मूवमेंट हो तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। एग्जाम्पल ऑफ द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आयरन, कोबाल्ट, निकेल, CrO2, etc.
1 पॉइंट पूछा जाता है, विच टाइप ऑफ सब्सटेंस आर यूज टू फॉर्म अ परमानेंट मैग्नेट, which type of substance are used to form a permanent magnet? That is the answer is the ferromagnetic substance is used to form a permanent magnet. Why? Metal ion of a ferromagnetic substance are grouped into a small region. जो भी मेटल आयंस होते हैं वह एक स्मॉल रीजन में ग्रुप्ड होते हैं क्योंकि उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत कम होता है। इस ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन या ग्रुप ऑफ मेटल आयन को हम क्या बोलेंगे? डोमेन्स बोलेंगे। These domain act as a tiny magnet. In an unmagnetized piece of the ferromagnetic substance, these domains are randomly oriented and are randomly distributed. कोई भी unmagnetized substance होता है उसमें यह जो डोमेन्स होते हैं वह रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं या रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं, जिससे वे एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को कैंसल आउट कर देते हैं। ठीक, when this substance placed in the magnetic field, all the domains get oriented in the direction of magnetic field and strong magnetic field produced. This effect is constant and ferromagnetic substance become permanent magnet. जैसे मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो एक ही डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे? यह ओरिएंटेड हो जाएंगे और यह इफेक्ट कांस्टेंट होता है, मैग्नेट के हटाने पे भी बना रहता है, जिससे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है परमानेंट मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट, antiferromagnetism, substance which have equal number of parallel and anti-parallel domains or electron domains, and these electron domains cancel out each other magnetic moment is called the antiferromagnetic substance, and this property is called the antiferromagnetism. That means in the antiferromagnetic substance have the equal number of clockwise electron domain and anti-clockwise electron domains. These are cancel out. यह एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट या स्पिन को कैंसिल आउट कर देते हैं, जिससे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आर फिनिश्ड। दिस टाइप ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं कि दैट हैव द इक्वल नंबर ऑफ पैरेलल एंड एंटी पैरेलल इलेक्ट्रॉन डोमेन्स। फॉर एग्जाम्पल MnO, Mn2O3, MnO2. Next, substance which are weakly attracted by the magnetic field. जो भी सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड से बहुत ही कम अट्रैक्ट होते हैं and have the unequal number of parallel and anti-parallel electron domain is called the ferrimagnetic substance, and these properties is called the ferrimagnetism. मतलब जिस भी सब्सटेंस में अनइक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पैरेलल एंड एंटी पैरेलल इलेक्ट्रॉन डोमेन्स होते हैं उनको हम फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं, और यह मैग्नेट से वीकली अट्रैक्ट होते हैं, बहुत स्मॉल अमाउंट में अट्रैक्ट होते हैं, जिसको हम और इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे? फेरीमैग्नेटिज्म बोलेंगे। इसको आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं। सो द chapter solid state of the class 12 are complete. In next class we provide the NCERT question for the solution. Thank you.